Hello students, I am M.K. Roy. Today we are having the topic conservation of charges. In earlier class I have given you the additivity of charges. This is the second property, very convincing property. This is called conservation of charges or charge. Dear students, what does it mean? Charge remains conserved means these cannot be created, these can neither be created nor be destroyed, isn't it? Nor be destroyed. यानी चार्ज का लॉस और गेन नहीं हो सकता है. कहां लॉस और गेन नहीं हो सकता है? वी हैव टू टेक एन आइसोलेटेड सिस्टम जहां पर चार्ज का लॉस और गेन नहीं होगा. बट व्हाट शुड बी अनदर वर्ड्स और सेंटेंस दैट चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. जहां हमने देखा था कि whenever two bodies are rubbed together, then one body loses electron and second body gain electron, right? So let us have the same concept again. Suppose one body is here and second body is rubbed with this one. Then what happens? Suppose this body loses 5 electrons and it gets transferred over here. So it gains 5 electrons. It means that 5 electrons get lost from here and it gains the 5 electron. So it is efficient of electron, this is deficient of electron, this is 5e. In this case, what we have found earlier, that in earlier stage, without rubbing, both were having charges, total charges, Q initial 0, because both bodies were neutral bodies. But after rubbing, what happens? Q final equals plus 5e minus 5e equals 0. It means that चार्ज का ना लॉस हुआ है और ना गेन हुआ है. नेट चार्ज 0 है आफ्टर rubbing and before rubbing. So charge remains conserved in this system. And what is called this system? ये चार्ज इसके लिए सेपरेटली कंजर्व नहीं है. कहा कंजर्वेशन लॉ फॉलो हो रहा है? एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, उस सिस्टम के लिए जिस पर किसी एक्सटर्नल फील्ड का प्रभाव ना हो, इन्फ्लुएंस ना हो. दैट इज नो चार्ज कैन बी गिवन, एक्स्ट्रा चार्ज कैन बी गिवन टू द सिस्टम और एनी चार्ज कैन बी टेकन फ्रॉम द सिस्टम. इन दिस सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, the total charge before rubbing 0, after rubbing 0, and this was the basic law, that is basic theory of conservation of charge, right? Now try to understand here one very pinpointed thing, that whenever we say that charges remain conserved, that is neither created nor destroyed, then we are talking about electron. Charge means electron. And what is electron? Electron is a particle. Okay? And this particle is mass. Now, what is that pinpointed thing? That charges can neither be created nor be destroyed. But if charge is electron, that is mass, can we say that electron or the particle also cannot be created nor be destroyed? And this was very pinching question, and so many scientists worked upon this and they have experimented upon this and actually found that what happens here, that charges remain conserved but mass or particles can be created or destroyed. वो कंजर्व नहीं होता है. Let us see example जो एक नेचर में ही हो रहा है. This is very natural process that nature loves symmetry.
कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो चला गया वो वापस नहीं आ रहा है. एवरीथिंग इज इंटर कन्वर्टिबल. होगा सिर्फ यही कि एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में चला जाएगा. लेट्स सी हियर इन नेचर it is showing that particle is getting destroyed. Okay, कहां पर एक न्यूट्रॉन is neutral, that is charge 0, it getting transformed continuously into one electron and one proton, that is positive charge. I can write here this is also E minus and E plus. Positive charge for proton and negative charge for electron. What we found here? This neutron is a particle. This is a particle, and particle is getting lost, and new things we are obtaining, new particles we are obtaining, but this is not neutron. Is it neutron? Is it neutron? No. What is I am trying to say here? That charges remain conserved, but particles are not conserved. Particles get lost. Particles can be created or particles can be lost, destroyed. First evidence is here. और ये नेचर में लगातार हो रहा है कि एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन में चेंज हो रहा है. See here, final. This is Q initial equals 0. This is final for this system. This is Q final equals 0. So again we have charges conserved. Title is again true. That total charge before interaction, before process, before reactions equals 0, and after reactions, after process equals again 0. So net charge का ना लॉस हुआ ना गेन हुआ, ये नेचर में हो रहा है. Now experimental verifications were done to find out how charges remain conserved. So many theories we have, and first discovery was there on the name of Watson, and just after 1 year of Watson discovered or given the experimental verification of this conservation of charges, there was Benjamin Franklin, and after Benjamin Franklin, final convincing theory was given by experimental theory was given by Michael Faraday. और सभी ने यही किया, टेस्ट किया कि चार्ज कंजर्व रहता है. लेकिन एक बात मिसिंग है कि पार्टिकल का क्रिएशन होता है और डिस्ट्रॉय भी होता है ना. और इसे हम आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन से देख सकते हैं. व्हाट इज मास एनर्जी रिलेशन? वी हैव E equals mc square. Very famous relation, right? E equals mc square. What does it tell you? It tells that both mass and energy are interconvertible. परिवर्तनशील है. मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है. Like this. This is Einstein's theory. Now see here, this is the mass of the particle, this is energy, and this is speed of light. Dear students, this speed of light is very large. This is 3 into 10 to the power 8 meter per second, or you can write 3 kilometer per second. Now see, if it is very high, square is there, then even very small mass, negligible mass can have very large amount of energy. ये बहुत लार्ज भी हो सकता है, isn't it? Because this is the product. छोटी क्वांटिटी को बहुत लार्ज क्वांटिटी से मैं मल्टीप्लाई अगर करता हूं तो प्रोडक्ट हाई हो जाता है. छोटा पार्टिकल भी होगा ना, उसके पास हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा. अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं सुने. आइंस्टाइन ने बोला कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है. इसका मतलब फिर से ये हुआ कि मास दैट इज पार्टिकल कैन बी लॉस्ट, पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड, but charge remains conserved. See, what are the evidences related to this one? First evidence, यानी evidences में लिख रहा हूं. First evidence was that when a gamma particle, that is photon, packet of energy, which is neutral, having energy h nu, E equals h nu. Nu is the frequency, h is the Planck's constant. So
when gamma particle interacts with a nucleus of matter. Suppose this is nucleus of a matter, यानी मैटर के साथ जब ये इंटरेक्ट करता है, गामा रे बोल सकते हैं, हैविंग एनर्जी, इट इज न्यूट्रल, देन इट गिव्स आउट one electron and one, I am writing here, E plus, and this particle is called positron. Mind it, this is electron. Electron and positron. Positron is the antiparticle of electron having the same magnitude of charge but opposite sign. This is having 1.6 10 to the power minus 19 coulomb, and this is having again, this is minus for electron, and if you write for positron, this is plus 1.6 10 to the power minus 19 coulomb. Only difference of sign is there. So what we got here, that when gamma, that is energy, interacts with matter or nucleus, we get two new particles. That is, one energy getting converted into masses, isn't it? Energy getting converted into masses, and this reaction is called pair production. पेयर, युग्म जिसको बोलते हैं, दो नए पार्टिकल का जन्म हुआ, यानी एनर्जी कहां बदल गया, कन्वर्ट हो गया, मास में बदल गया. हियर ऑल्सो energy gets converted into mass, but also charge is same, q initial 0 and q final equals minus, yani -1 we can take here and plus. So we have equals 0, that is +1 and plus -1. I am writing here plus E and minus E for positron and electron. So this is for positron, this is for electron, and total charge is 0. Again, conservation of charge comes here. Total initial equals total final. For an isolated system, whole system, this is conserved. What is conserved? Charge is conserved, but energy is not conserved here. Means masses are created with the help of energy. Energy gets converted into masses. Again, this is supporting this one. That energy gets converted into mass, and this is called pair production. Now take the reverse case of this one. Okay, अब क्या देखना है कि एनर्जी तो मास में कन्वर्ट हो गया. अब क्या देखना चाहिए, क्या ये मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है? रिवर्स दिस प्रोसेस. आफ्टर रिवर्सिंग व्हाट वी गेट, कि व्हेन अगेन दिस electron and positron interacts with each other, then we get gamma particle again, that is gamma ray, that is photon having charge 0. See the charge here, +1 -1, sorry, and this is +1. So this is sum out to be 0, finally 0. So what is the result again? Q initial equals 0, Q final equals 0. Okay, charge is conserved for the isolated system. Charge is conserved. But what happened here? Masses or mass of two particles get converted into energy, because this is energy form h nu, packet of energy, photon energy. So two particles interacts with each other to give the energy. कहने का मतलब पूरी तरह से ये दोनों सपोर्ट कर रहे हैं कि एनर्जी मास में और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है. और मैं इसे बोलता हूं इस रिएक्शंस को, दिस इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन, एंड दिस इज जस्ट रिवर्स ऑफ दैट वन. दिस इज कॉल्ड एनिहिलेशन प्रोसेस. Annihilation. Okay, so lot many evidences we have which tell you that the charges can neither be created nor be destroyed. वो हमेशा कंजर्व हो रहा है, but the particles which is carrying the charge may not be conserved.
cannot be conserved. It may be created, it may be destroyed, right? So we have the two examples here. First is pair production, second is annihilation. Just reverse process, और दोनों आइंस्टाइन्स के रिलेशन को सपोर्ट कर रहे हैं. एनर्जी मास में जा रहा है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी रूप परिवर्तन हो रहा है, एक लॉस हो रहा है, उसकी आत्मा किसी दूसरे में चली गई. यानी कोई एक डेड हो गया पर्सन, उसकी आत्मा, मैं क्या बोलता हूं कि उसकी आत्मा किसी दूसरे में है. इसका मतलब आदमी वो तो नहीं है ना, पार्टिकल तो लॉस हो गया ना, मास तो लॉस हो गया ना, वो नहीं है, बट इसका एक रूप है. सो एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और ये परिवर्तनशील है, ये चलता रहता है, ये हो रहा है. एंड दैट्स व्हाई वी से नेचर लव्स सिमेट्री. We can see nuclear reactions also where uranium 238 having charge 92, that is 92 protons, 92 electrons, जब ये किसी अल्फा पार्टिकल को देता है, अल्फा पार्टिकल को, यानी अल्फा पार्टिकल एक डबली चार्ज्ड हीलियम एटम होता है, डबल चार्ज होता है, 2 चार्ज, 4 एटॉमिक मास नंबर. सो हीलियम डबल चार्ज वाला, दिस इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल. जब यूरेनियम एक अल्फा पार्टिकल को लिबरेट करता है, डिके करता है, अल्फा पार्टिकल को डिके करवाता है, तो एक नया एलिमेंट हमारे पास आता है जो है थोरियम. और थोरियम का चार्ज है 90. नाउ सी 90 plus 2 is 92. Charge remains conserved. Also in case mass remains conserved, so what should be here? 234. See, we are concerning to this one only. Q initial equals 0. Q initial equals 0. Q initial equals 92. And what is Q final? Q final equals 90 plus 2, that is 92. Here again, it is supporting that charges remain conserved, but it is not related to mass and energy. I have given two laws supporting mass energy relation, and these are for conservation of charge. Charge remains conserved. Okay, so this is all about the conservation of charge. Finally, हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आया, कंक्लूजन, कि चार्ज तो क्रिएट नहीं हो सकता है, और ना नया चार्ज लॉस हो, चार्ज का ना लॉस हो सकता है, ना चार्ज का गेन हो सकता है. कंजर्व रहता है किसका? एक आइसोलेटेड सिस्टम का. सिर्फ ट्रांसफर पॉसिबल है. सो चार्जेस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, बट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. बट मास और द पार्टिकल्स कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, एंड वी हैव दिस एग्जांपल सपोर्टिंग दिस वन. ओके, thank you. Now we will see next property, that is quantization principle, in next video. Thank you for watching.